Hello everyone and welcome back to my YouTube channel पप्पू करियर गाइड, कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। तो फ्रेंड आज आपका हो गया 14 नवंबर 2021। आज की वीडियो में बात करने वाले 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स को लेकर। फ्रेंड अभी टाइमिंग जो हो रहा है वो रात के 12:45 AM, मतलब कि 15 नवंबर यहाँ पर फ्रेंड आ चुका है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो कि फ्रेंड आपका आएगी इंफोसिस की तरफ से, टीसीएस इंटरव्यू अपडेट को लेकर, कैपजेमिनी को लेकर और आपका एसेंचर को लेकर। तो फ्रेंड वीडियो को तक बने रहना। फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ एक लाइक जरूर करना। चलिए फ्रेंड करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। एक बार थैंक यू सो मच फ्रेंड। जब भी मैं बोलता हूँ वीडियो का एम लाइक रखता हूँ, मैं आप लोगों के लाइक्स आने लगते हैं। फ्रेंड आज के वीडियो का एम लाइक रखते हैं फ्रेंड, रखते हैं 65 लाइक्स का। फ्रेंड प्लीज़ यार फिर 65 लाइक्स आप लोग कर देना फ्रेंड, क्योंकि आप लोग के लाइक्स देख के मैं रात में वीडियो वगैरह बनाता हूँ, ताकि क्योंकि आप लोग काफ़ी अच्छा मतलब सपोर्ट दिखाते हैं। चलिए फ्रेंड करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। ओके तो फ्रेंड आज की वीडियो लाइक का एम जरूर आप लोग पूरा कर देना फ्रेंड, ठीक है। चलिए सर सबसे पहले बात करें फिर कैपजेमिनी को लेकर। आप लोग के बहुत सारे लोग मैं देखा था कमेंट वगैरह करते रहते हैं कैपजेमिनी को लेकर। बता दो फ्रेंड, जब कैपजेमिनी का आप लोग जब फ्रेंड TRMR दे तो बता दो फ्रेंड, कैपजेमिनी में केवल एक ही राउंड होते हैं। देयर इज ओनली वन राउंड इन कैपजेमिनी आफ्टर कंप्लीटिंग योर एग्जाम। इफ यू आर रिसीविंग योर वर्क स्टाइल रिपोर्ट, दिस विल नॉट इंडिकेट दैट यू आर यू आर क्वालिफाई फॉर द एग्जाम। ओके बिकॉज वर्क स्टाइल रिपोर्ट जब आता है तो वो आपका राउंड 4 के बाद आता है। लेकिन हाँ वो कहीं ना कहीं एक ऑप्शन होता है कि हाँ अगर आप पास वर्क स्टाइल रिपोर्ट आ रहा है इट्स मीन यू आर एलिजिबल फॉर द कैपजेमिनी इंटरव्यू। अब इंटरव्यू आने में फ्रेंड ये आपका रैंडम प्रोसेस है। इट विल टेक 1 day 2 day और इट विल गो अप टू 2 to 3 months। ओके दिस इज अ रैंडम प्रोसेस। ओके बिकॉज इट विल टेक लॉट्स हेल ऑफ टाइम। ओके because I already talked most of the students who are going for the Capgemini, they are still waiting their LOI after completing interview and after showing offered. If they are getting LOI, this type of mail, this is a LOI letter of intent mail. After getting this mail, it's been 28 days already passed away, but did not received any offer letter from them. Okay, any communication mail, any laptop mail, nothing going to be happen right now because they will take lots of time. Okay so this will mail you will receive after completing your interview round, and after interview you will receive this mail in 2 days to 2 months. Okay in between them. Capgemini, congratulations on your selected and present your letter of intent. So if you're going for the Capgemini and TCS, so you have to keep patience, lots of patience. Okay so you can see at Capgemini we work with a world leading brand, enhance and transform the way of do business. We do with the passion वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पर देखें। We request you to ensure you complete all the prerequisites information as well update all the required document asked during the course of this process before November 10, 2021 8:30 PM IST। आपको इस पर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है? पासपोर्ट साइज फोटो, ऐसे 10th 12th सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट मतलब कि PDC अगर है तो, गवर्नमेंट ID कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या फिर वोटर ID कार्ड में आप लोग कभी एक अपलोड कर सकते हो। डिप्लोमा सर्टिफिकेट अगर आपने करा है तो, डिप्लोमा सर्टिफिकेट अगर आपने करा है तो सेम बाकी समय, ठीक है। तो ये फिर आपको अपलोड करना पड़ता है। आपको एक लिंक देखने को मिलता है, ठीक है, आपको इसे कंप्लीट करना पड़ता है। ओके सब कुछ मेंशन किया होता है कि आपका सब कुछ स्कैन में अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आने के बाद फिर अगर आप इफ़ यू आर गेटिंग LOI मेल, देन आफ्टर यू हैव टू वेट फॉर 2 to 3 weeks फॉर द ऑफर लेटर एंड ज्वाइनिंग लेटर बिकॉज इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। ओके दे विल सेंड, it's not like that they will forget you, they will not forget you, but you have to keep patience, lots of patience. Okay as I already told you. So this is the second type of mail you are receiving right now. Most of the students already asked me for the same, sir please discuss and prepare and share the preparation material and also exam pattern. So I will discuss right now. Emphasis assessment test wrong in details. Okay dear candidate, thank you for interest in your chosen profile at Emphasis Limited. As a first step of our requirement process, you are hereby to advise undergo computer based online requirement test. Emphasis, I already created one video. If you go and check Emphasis is still hiring or not. If they are hiring, then go to apply, then just apply. A personal computer laptop. Okay तो यहाँ पर webcam, spoon, uninterrupted connectivity. Okay so right now I think 12 AM 15th of November you can give the exam. Okay so I will discuss, I will share the preparation material. Wait okay just this type of mail you will receive after giving your TR round, as you can say like HR round. Okay TCS interview update, dear candidate please ignore the previous invite mail. This type of mail you will receive after completing your technical round or HR round. Okay and then if you are see what I'm going to tell you right now. Okay let's suppose you are completed your technical round. Okay if you completed your technical round, then also you completed your HR round, and after that you are again receiving TR round. Okay just see the flow. If you completed TR round, then receiving HR round. After completing HR round, if you are receiving TR round, and if you are again receiving TR round. Okay and
if they are not sending this type of mail, then you should attend this TR round and just tell them, sir, I already completed the technical round or HR round. So what type of interview is this? Okay, and if they are sending technical round and after sending technical round, like after completing HR round, you are again getting TR round and again you are getting this type of mail, then please ignore this mail. You do not have to attend this interview, okay, because this is a by default they are still they are sending. Okay, please ignore it. You can only ignore your technical and HR round after completing technical and HR round only if you are receiving this mail. If you are not receiving this type of mail, then just attend your technical and HR round, and starting of your interview, you just tell to the interviewer that, sir, I already completed my technical and HR round, so should I again attend, or what type of this interview is? Okay, are you getting my point? Okay, so if you're receiving this mail, then you should ignore the interview, technical round or HR round. Okay, so I think I already discussed most of the points. Okay, this point I discussed. Okay, I will share the preparation material, okay, from the Prep Insta. Okay, wait for some time. Okay, and when we receive Capgemini, I already discussed, it will random process. It will take 2 days to 2 weeks to 2 months. Okay, how to clear Accenture TFA. So lots of students are asking the same questions, sir, how to clear TFA mocks. So here you can see mock test is not a compulsory, sorry, it is not a pass or fail, but you have to attend the TFA mock test and final TFA. If you completed your pre-learning module in 45 days, then you can complete. And if you want to use malpractice, then I will suggest do not use malpractice, because they will check hardly, their AI is very fast and they will judge you. And if you can, okay, I'm not here to tell anything right now, because you already know how people are doing right now. If you want, then you can do malpractice and also, okay, and you join any type of Telegram group, as it totally depends upon you. But I will personally suggest go through your all learning module till now. If you have completed your pre-learning module very nicely and you solved each and every RDBMS question, MCQ question and coding questions in Java, and if you are belonging from the technology, then I think you are eligible to qualify. Okay, easily you can qualify. If okay friend, I have one PDF is there. If you want, then just comment down in video. I will share on my Telegram group, not in this particular video. Okay, and just comment down, I will share one PDF. Okay, in on the particular PDF you will getting all your preparation material, how you can clear the exam. Okay, and totally depends upon you. Okay, so friend, this is the Prep Insta website. Okay, this link I will provide you in my video description. Okay, emphasis previous year placement paper with answer 2022 PDF, emphasis placement paper previous year. Okay, here you can see total section is like quantitative aptitude, verbal, logical reasoning, computer programming. Okay, so this type of question you will receive, and total section 4 and time 120 minutes. Adaptive no, adaptive non-adaptive no. Okay, नेगेटिव मार्किंग इसमें आपका नहीं है, there is no नेगेटिव मार्किंग. एप्लीकेशन 1000 जो अपनी आपको यहाँ पर मेंशन किया 2021 का, ठीक है, आपको बस ये 4 सेक्शन ही फॉलो करना होगा. ओके, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितने आपके क्वेश्चन आने वाले, टोटल टाइम ड्यूरेशन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ओके, यू कैन सी ऑल द preparation material of logical, verbal, computer programming. Okay, you just start your preparation right now, and if you want, you can prepare for me here also. Okay, and you can see all the type of questions and quantitative and logical. Okay, and you can see question are the content. Here you can see all the links are available. Okay, and if you want, you can just go through their prime video also if you want. Okay, otherwise you can just prepare from there also. Okay, and I will provide this link in my video. So I think I discussed all the points. If you have still doubt, just comment down in my comment section. मिलता है पूछ till then. जय हिंद, जय भारत and good night.